So any doubts in yesterday's session? सेशन में कुछ डाउट है? One minute, I am getting the PDF. फ्लड रूटिंग के बारे में पूरा पता हो गया? मूव ऑन देन. गुड मॉर्निंग लक्ष्मी गारू. Good morning. So we are moving towards Muskingum method, because this is the method which gives you every ordinate of outflow hydrograph. For example, inflow hydrograph is having like this time 0, 1, 2, 3, 4, 5 like this. I inflow hydrograph. Inflow hydrograph carries some values. Then outflow hydrograph we require na, wo Q. In the previous methods, they talk about Q1, Q2, I1, I2 only. They never talk about individual ordinate. Na? Have we discussed about individual ordinate there? Modified pulse method, Goodrich method. Because we need to make a hydrograph. As we need to make a hydrograph, we require every ordinate, not one ordinate or not two ordinates. Each our ordinate we need to carry out. So that best suitable equation to get every our ordinate, that is Muskingum equation. So what is Muskingum equation is going to say? Qn is equal to C naught In, C1 In minus 1, C2 Qn minus 1. Muskingum equation is going to conclude C naught In, C1 In minus 1, C2 Qn minus 1. I will make it simplified for you. You don't take more tension. Okay. And we are talking about a flood hydrograph. So flood hydrograph does not carry any 0, 0. 0 with some value it will be carrying. We can say 0i. Okay. 0i. Because it carries some base flow. Na? So 0 tower may be some value hota hai. 0 tower may be some value hota hai. A 0 tower ka base flow value we are taking I. Same as it is you can write. Same base flow value you can write for 0 tower I. If by chance in your data 0 tower not given, first tower only given, then first tower value as it is copy karo. Whatever initial value I and Q. ये समझ आ गया पहले? Initial value I and C will be same. ये समझ आ गया पहले? हाँ. Now we need Q1. Now what is N? N is equal to 1 now. N is 1. Q1. So C naught I1 plus C1 I1 minus 1 I naught. I1 minus C2 Qn minus 1 minus 1 0. 1 minus 1 0. Na? N is equal to 1 in this case. N is equal to 1 in this case. So you can write C naught A. I1 is A. I1 is A na? Plus C1 I naught is I. C2 I. Understand? C naught A, C1 I, C2 I. वॉइस तो क्लियर है या नहीं? वॉइस इज क्लियर और नॉट? ये बोलो पहले. हाँ सुनो, this is our formula. Okay, N is the ordinate for which you are finding discharge value. N is the ordinate for which you are finding discharge value. कौन सा ऑर्डिनेट को डिस्चार्ज निकल रहा है? ये ऑर्डिनेट नंबर. सो ये पहले ऑर्डिनेट होता है. दिस इज 0 ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट नंबर क्या होता है? ऑर्डिनेट 0, ऑर्डिनेट 1, ऑर्डिनेट 2, ऑर्डिनेट 3 होता है. सो नाउ यू नीड Q for first ordinate. Q for first
मिनट, नेटवर्क तो चेंज करेंगे। Now it is clear. Now it is clear ना? So n is 1, ये समझ हो गया, ऑर्डिनेट समझ हो गया, ऑर्डिनेट n is equal to 1 फर्स्ट ऑर्डिनेट निकलना पड़ेगा हम। एंड यू रिमेंबर फार्मूला में C0, C1, C2 these are constants, they won't change their values. C0, C1, C2 are constants, सेम जगह पे सेम वैल्यूज रहेगा, they won't change it. ओके, सो C0 ऐसा लिखता है, C0 सेम लिखता है हम। in क्या है, व्हाट इज n? n is 1 ना, n is 1 ना, I1 ओके, प्लस C1 as it is you can write in minus 1 means 1 minus 1, previous ordinate na, previous ordinate I0 plus C2 again q is minus 1, q0, so C0, अरे रुको वो भी लिख रहे हैं ना बेटा, I1 क्या होता है, I1 what is I1? I1 is ये लिखो। C1 what is I0? What is I0? I0 is I, C2 what is Q0? Q0 also I होता है ना। और अभी आसान आएगा आपको, you can understand more well if you write Q2. What should be Q2? C0 I2 C1 I1 C2 Q1 आता है या नहीं? C0 I2 C1 I1 C2 Q1। किसी को डाउट है इनके बारे में? किसी को डाउट है इनके बारे में? बोलो कुछ डाउट होगा तो। C0 I2 क्या है? फॉर एग्जांपल I2 इज B, C1 I1 इज A, C2 Q1। बस Q1 तो वैल्यू कुछ आएगा हमको, ये वैल्यू निकल जाएगा उधर, यू कैन टेक दैट वैल्यू, अंडरस्टैंड? लाइक दैट सेम यू कैन कंटिन्यू फॉर Q3 Q4 Q5, whatever the values available you continue the same. Is that clear? किसी को डाउट है इनके बारे में फटाफट पूछ लो। And when we solve numerical ना वो ज्यादा पता करेगा। When we solve numerical ना you understand more. थोड़ा रुको, हाँ नोट करो बेटा, write down everything, write down whatever I write here in the slide, everything write down. फार्मूला तो ये होता है, थप्पड़ मिलेगा। ये कौन है रे बाबा मुसाफिर, ये कैसा होता है? ये पूरा एस्टिमेट करने के बाद क्या मिलेगा, ये Q1 होता है। After substituting values and you added up, after estimating whatever you get, that will be Q1 ना। No, this is only Sudha garu, this is only Sudha uncle. कुणाल जी हम न्यूमेरिकल चलने के बाद 100% पता चलेगा, टेंशन में मत चलो, पहले तो लिखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे पूरा पता चलेगा। Noted, done, चलो। So we have three constants, C0 plus C1 plus C2 is equal to 1, C0 plus C1 plus C2 is equal to 1, okay? C0 is equal to minus ये upon, एक काम करो, just you write ये only, you can write ये upon k plus ये upon k plus C0 is equal to ये upon k plus So what is this A? A is minus kx plus 0.5 delta t, minus kx plus 0.5 delta t. C0 is equal to A upon k plus A upon k plus A. So अब तो क्या लिख सकता है? 1 minute guys, you can write here minus here minus here k minus that should be easy then. Minus A by k plus k minus minus A by k minus हाँ सेम कल वाला है, k and x तो सेम, minus A by k minus so you get minus kx plus 0.5 delta t
upon k minus kx plus 0.5 delta t. Okay, minus kx plus 0.5 delta t, k minus kx plus 0.5 delta t. Oh, it is for minus kx only. Kx is for minus only for this. समझ नहीं आ रहा है? No, minus a. Okay, you need k only for kx minus means we can't take total minus, na? Okay, understood, understood. Then you take first one is correct then. Then first one what we have written a by k plus a. Correct. Correct, correct, correct. A by k plus a is correct then. Sorry. A by k plus a is correct. A is equal to minus kx plus 0.5 delta t. As it is लिखो. As it is लिखो हो जाएगा ना अभी. अभी तो करेक्ट हो जाएगा देखो. ये तो हम डायरेक्टली दिएगा फार्मूला प्रीवियसली. आपके लिए ऐसा कर लिया क्योंकि याद करना आसान होता है. This is final, no doubt. अरे C naught is equal to a by k plus a is equal to minus kx plus 0.5 delta t. C naught is equal to minus kx plus 0.5 delta t by k minus kx plus 0.5 delta t. ये समझ आ गया? अरे क्लियर, सी नॉट को क्लियर हो गया, सी नॉट को क्लियर हो गया. हाँ चलो C1 लिखो अभी, अभी C1 लिखो. C1 में b अपॉन k प्लस ए, b अपॉन k प्लस ए. b क्या होता है? b इज इक्वल टू प्लस kx होता है, kx प्लस 0.5 डेल्टा टी, kx प्लस 0.5 डेल्टा टी. सो डायरेक्टली kx प्लस 0.5 डेल्टा टी, k माइनस k माइनस kx प्लस 0.5 डेल्टा टी. जस्ट ओनली माइनस नहीं है, ये b होता है. जस्ट ओनली देयर विल बी नो माइनस, दैट विल बी b. अब समझ आ गया बाबू? b बाई k प्लस ए, b अपॉन k प्लस ए. ये तो ये हो गया ना बेटा. अरे ये तो ये ले लिया, इट इज नॉट b. ये मीन्स दिस वन ओनली ना, ये मीन्स दिस वन ओनली ना बेटा. To be available na, in that ground level confined to be, if it is only unconfined, what we can do? The layer is only unconfined. Sanya, what you can do? That depends on state to state, region to region, location to location. That is varying, na? Huh, that is varying, na? If I go for delta regions, you know what are delta regions? Listen, listen. If you talk about delta region, where rivers are more, obviously unconfined aquifers are more in it, more zone of saturation.
minus kx plus 0.5 delta t. जस्ट ओनली माइनस नहीं है, ये बी होता है. जस्ट ओनली देयर विल बी नो माइनस, दैट विल बी बी. अब समझ आ गया बाबू. बी बाई के प्लस ए, बी अपॉन के प्लस ए. ये तो ये हो गया ना बेटा. अरे ये तो ये ले लिया, इट इज नॉट बी. ये मींस दिस वन ओनली ना. ये मींस दिस वन ओनली ना बेटा. समझ आ रहा है? नीचे में ये है बी नहीं, नीचे में ये है बी नहीं. बी अपॉन के प्लस ए अपॉन के प्लस ए, बी अपॉन के प्लस ए. समझ आ गया? बी अपॉन के प्लस ए अपॉन के प्लस ए. समझ आ गया बाबू? अब तो C1 को C2 को लिखना पड़ेगा. ये तो आसान है. C2 1 माइनस C0 प्लस C1, बिकॉज C0 प्लस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1. C0 प्लस C1 प्लस C2 इक्वल टू 1 होता है ना. सो ये तो आसान है. अभी 1 माइनस होता है. क्लियर नाउ? क्लियर नाउ? डेल्टा टी इज इन आवर्स. टाइम डिफरेंस, यूनिट टाइम डिफरेंस लेता है ना बेटा. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 टाइम डिफरेंस मिलेगा ना. यूनिट टाइम डिफरेंस क्या ले रहा है? व्हाट शुड बी द टाइम डिफरेंस वी आर टेकिंग ओवर हियर? अंडरस्टैंड निपुण भैया? डेल्टा टी टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टाइम इंटरवल बिटवीन ऑर्डिनेट्स. टाइम इंटरवल बिटवीन ऑर्डिनेट्स बोलो. डेल्टा टी टाइम इंटरवल बिटवीन ऑर्डिनेट्स. दैट शुड बी टेकन इन आवर्स. दैट शुड बी टेकन इन आवर्स. अरे इतना जरूरत क्या है आपको? हर एक वैल्यू चाहिए सुधा गारू. एवरी वैल्यू यू नीड. सो C0 C1 निकालो. आफ्टर दैट C2 आसान होता है. भाई आर टेकिंग फार्मूला अगेन. अननेसेसरी टाइम वेस्ट. आसान काम करो. आटा ज्यादा करने का काम मत करो. यू आर वर्किंग लाइक ए मिस्त्री. मिस्त्री जल्दी काम करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा. लेट काम करेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा मिस्त्री को. ऐसा सोच रहे आप? चलो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा बेटा, आपको पूरा पता चलेगा. ओके. a 12-hour flood hydrograph with ordinates of 12-hour flood hydrograph with ordinates of 12-hour time intervals. 12-hour time intervals are given as 100, 750, 780, 450 and 250 meter cube per second respectively from 0th hour. From 0th hour. The outflow hydrograph flood routing coefficients. Outflow hydrograph flood routing coefficients. Outflow hydrograph flood routing coefficients. K and X are given as 18 and 0.3 respectively. Find ordinates of outflow hydrograph. Completed writing the question. I will solve you. Don't worry. Completed writing the question. K is given 18. X is given 0.3. 12-hour time intervals they said na. Delta T is 12. So C0. So C0 is equal to, okay, before C0 we can get first AB. A is equal to minus of Kx. 18 into 0.3 plus 0.5 into 12. What is A? Minus 18. Please take minus 18. Minus 18. ब्रैकेट नहीं बेटा, ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट छोड़ दो. माइनस kx लेना पड़ेगा. ओनली माइनस इज फॉर kx. ओनली माइनस इज फॉर kx. 0.6. 0.6. B is equal to 18 into 0.3 plus 0.5 into 12. 11.4. 11.4. C0 is equal to, C0 is equal to 0.6 upon K वैल्यू क्या है? K वैल्यू 18 क्या बोल रहे प्लस 0.6. 0.6 by 18.6.
सो यू गॉट माइनस 0.6 हियर, इधर आपको प्लस 0.6 आ गया, माइनस 0.6 आ गया, ये बात बताओ पहले. Then here plus only to be taken now, na? Plus only to be taken, na? Why are you confusing? Because we got the value of this total 0.6 plus 0.6. Who is saying minus? Lakshmi garu. Understand now? Understand now? Direct a का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, डायरेक्ट a का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, बस ये k प्लस ये, दैट्स इट. ये माइनस में आ गया, माइनस में ले लो, प्लस में आ गया, प्लस में ले लो, k प्लस ये. फार्मूला देखो, नो नीड टू चेंज एनीथिंग. ये अपॉन k प्लस ये, दैट्स इट. ये अपॉन k प्लस ये, दैट्स इट. 0.0323. 0.0323. C1 11.4 by 18 plus 0.6. 11.4 by 18 plus 0.6. 0.61. Then C2 क्या मिलेगा बोलो? 1 minus 0.612 plus 0.0323. 3548. ये 0.35 ले लो, 0.355 ले लो, ये 0.61 ले लो, राउंड ऑफ करो, हो जाएगा ना. वी जस्ट मेड राउंड इट ऑफ. चलो नाउ हमारा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा. टाइम 0, 12, 24, 36, 48, 60. What are the values? 100, 750, 780. I values 100, 750, 780, 450 and 250. 450 and 250 बस. These are the values. अब तो आएगा देखो what you can take for Q naught. What you can take for Q naught. Q naught क्या लेना पड़ेगा बोलो बेटा फटाफट. फटाफट Q naught 100. So now this one Q1 is equal to C naught 0.0323 into 750 present value ना, present value 750 plus 0.61 into previous value, ये तो previous value plus 0.355 into previous. समझ आ गया? So C2 C1 C2 में previous I and Q ले लो, first C naught में present Q ले लो, बस present I ले लो, बस होता है ना. What are you getting answer? What are you getting the answer? Please confirm me once. 120.8. 120.8. मुसव्विर समझ आ गया बेटा? It is not A. You said previously it is A. 120.8. हाँ 7257 120.7.8 कोई दिक्कत नहीं. अब तो Q2 मिलेगा 0.323 into what is now? What is now? What is I value now? Present I value लेना पड़ेगा. समझ आ गया कुणाल? 780. 0.61 into what is I value? Previous I value लेना पड़ेगा. Previous I value लेना पड़ेगा 750 plus 0.355 into what is Q? अभी एनालाइज किया 120.8. 120.8 क्या मिल रहा है Q2? 525.57. अब तो Q3 आएगा देखो Q3. So C naught C1 C2 are constants as it is लेना पड़ेगा. What is I value now? C naught I क्या होता है अभी? Present I क्या होता है? 450. Then previous I 780. Previous Q 525.57. क्या है आंसर? Those also we will solve. जल में मत चलो, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम. 807 कैसा आएगा गौरव बाबा? 807 कैसा आएगा बाबा? चेक करो एक बार. 676.73. 0.9 है, ओके 0.9 है. चलो Q4 0.0323 into 250, 0.61 into 450, 0.355, 676.91. So 523.77, 522.8. So मिल गया मैक्सिमम डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज. दिस इज पीक. समझ आ गया बाबू? क्या हो गया आदित्य रागे के घर में? क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे क्या? y naught at t is equal to 60.
आपको वैल्यू चाहिए उपाध्याय गारो, उपाध्याय आपको वैल्यू चाहिए क्या? हाँ, देन वाई नॉट क्यों पूछ रहे? देन वाई नॉट टी इज इक्वल टू 60 क्यों पूछ रहे? आपको मिलेगा उपाध्याय, वो दिया है अप टू 48, 60 में कैसा मिलेगा? डेटा तो दिया है ओनली अप टू 48, हमारा इनफ्लो हाइड्रोग्राफ डेटा नहीं है ना, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ डेटा दिया होगा वी कैन कंटिन्यू, ये तो डेटा भी नहीं दिया। अरे इनको भी मोटिवेट करो हर्ष, थोड़ा लड़की से दोस्ती बंद करो, बोलो पढ़ाई में ध्यान दो, बोलो इनको भी। आपको बोलो उपाध्याय गारो, कंप्लीटेड गाइस? C2 इज फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो बाबू, ये भी छोटा छोटा चीज भी बोलना जरूरी क्या? C2 is equal to 1 minus C0 plus C1 because C0 plus C1 plus C2 is equal to 1, C0 plus C1 plus C2 is equal to 1। अरे अनवर भैया आपका रिप्लाई भी दिया, देखो एक बार। अंकेश समझ आ गया? चलो कंप्लीटेड एवरीवन, और किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है पूछ लो फटाफट, ठीक है? बाद में और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, समझ आएगा। Muskingum method for flood routing used for routing of floods through reservoir, method of routing that uses continuity and momentum equation, hydrological method of routing flood streams, only energy equation is used। बोलो क्या होता है आंसर? बोलो आंसर क्या होता है बाबू? ठीक है, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा अभी। आशीष भैया अंड संयम, रिजर्वायर रूटिंग गुडिच and modified pulse na, reservoir routing is Goodrich and modified pulse na, Ashish and Sanyam, why Muskingum method? Question is about Muskingum, so ये तो गलत बात है। It is a method which uses continuity but not momentum ना, momentum यूज करेगा बी वाला, कौन है बी वाला? आयुषी, फिलगारू, कुणाल, श्रुति, रणव बाबू, सुधांकुल, सुधांकुल मोमेंटम यूज करेंगे? मोमेंटम तो यूज नहीं करेंगे, छोड़ो। हाँ, that is hydraulic routing, correct, that is hydraulic routing, hydrologic method of routing flood stream, yes, स्ट्रीम में कौन कौन पूरा आएगा ना, चैनल, रिवर, कैनाल, सो दिस इज करेक्ट। एनर्जी इक्वेशन तो कभी भी नहीं यूज करेंगे हम, एनर्जी इक्वेशन तो कभी भी नहीं यूज करेंगे, दैट सेंट विनांस ओनली मोमेंटम इक्वेशन। चलो, when an outflow from a storage reservoir is uncontrolled as in freely operating spillway, ध्यान से सुनो, you need this one। अरे कितना देर लगेगा रे बाबू? संयम गारू क्या कर रहा है, खिचड़ी कर रहा है उधर? When the outflow from storage reservoir is uncontrolled as in freely operating spillway, peak flow of outflow hydrograph occurs at, ये तो सिंपल होता है ना। So this is a dam, so here gates, water rises, water rises, now water is flowing, uncontrolled spillway से पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। So where is the peak of outflow hydrograph? Peak of outflow hydrograph, point of intersection of inflow and outflow, point after intersection of inflow outflow, tail of inflow, point where intersection of inflow and outflow hydrograph, before, point before, before after yet tail, बोलो before after tail। अच्छा गारू चपंडी, इतना साइलेंट में चलने के बाद नहीं चलेगा, अच्छा आंसर तो देना पड़ेगा, होता है गलत कोई दिक्कत नहीं, बोलो अच्छा गारू। गुड, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। अनकंट्रोल्ड स्पिलवे विद रिजर्वायर, ये बात सुनो, रिजर्वायर का बारे में बात कर रहे हैं, रिजर्वायर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अरे कल डायग्राम ड्रा किया, देखो एक बार यस्टरडे ड्रा डायग्राम ना, आपका पास रिजर्वायर का फ्लड हाइड्रोग्राफ डायग्राम है ना, कैसा आ गया? कहां है पीक इज एट इंटरसेक्शन पॉइंट और नॉट? देखो कल का डायग्राम चेक करो, यस्टरडे डायग्राम चेक करो बेटा, यस्टरडे डायग्राम चेक करो, एक बार पता चलेगा आपको। देखो कहां हो गया पीक, पीक इज एट इंटरसेक्शन ओनली ना, पीक इज एट इंटरसेक्शन ओनली ना, सी दिस वन, एट इंटरसेक्शन हो गया पीक, देखो because there is uncontrolled spillway, we are not controlling, please understand, uncontrolled है ना, uncontrolled, we are not controlling, inflow से आ रहा है, immediately चल रहा है, it is coming up from the inflow and immediately it is going out, immediately it is going out,
So I will write very clearly, Ritul. Uncontrolled means excess flow immediately discharges. Immediately discharges downstream. Excess flow immediately discharges downstream. So at intersection. Okay. Controlled. Storage carried for long time. Then peak occur before intersection. Because water getting stored a lot, suddenly release हो गया ना. Water is getting stored a lot, suddenly release हो गया. So water is jumping like anything. Water can go with a heavy flow, na. You have stored, suddenly all gates open. So suddenly all gates open means discharge is very high. Peak occur before intersection. So controlled, and storage carried for optimum time or short time. Storage carried for optimum or short duration. Peak occur after intersection. अब बोलो किसी को डाउट होगा. Now you can say, so optimum and you are not opening all gates. 1 or 2 gates only open. Peak will take very late na. So after intersection. So you have seen dam opening 1 gate of spillway, dam opening all gates of spillway. When dam opening all gates of spillway, then very long time storage होने के बाद. So dam opening the gates after very short time. So पानी कम होता है ना. You understand? You are making storage for long time, huge volume is there, so you have to open all the gates, water will release at a time, huge flood. But you made for short time storage, water is less, peak will be delayed. Clear now? Now और किसी को डाउट है? This is the tail. So this is exactly at intersection. देखो, that is exactly at intersection. ये देखो एक बार, exactly intersection में हो गया. So now क्वेश्चन स्लाइड पे ड्रा कर रहे हैं. So this is the peak, and this is the peak. Peak बाहर आ गया देखो, सतीश गारू. At intersection, before intersection, after intersection, exactly at intersection, recession limb. Still, how it's at the recession limb of intersection? How it means that depending upon the flood control, na, Madhu, you are allowing it to flow immediately. How it means? Nobody can say how it means. Even Muskingum also don't answer you. How means that is a condition where flow traveling immediately, there is no control. Water just overflow the spillway. You are not allowing storage for a long time. Just water came up, rises and flow down. Came up, rises and flow down. That's it. No storage. In such a case, it will come. This is inflow now. You are finding it at 2 different places. This yellow color one you are finding here. Green color one you are finding outflow here. So at 2 different places that will be possible ना. समझ आ रहा है? समझ नहीं आ गया तो बाय हार्ट करो बस. How outflow inflow will be same? How outflow inflow will be same? So you're not understanding. Inflow will be different, outflow will be different ना. चलो. Completed? सतीश बाबू निकोस में स्पेशल रहेगा उनकी सर. हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ गया. अरे एक थियरी क्वेश्चन को क्या बात कर रहे हैं? आदर्श उपाध्याय गारू. ये तो सेम क्वेश्चन है. In reservoir with an uncontrolled spillway, the peak of the plotted outflow hydrograph lies on the recession limb of a plotted inflow hydrograph. देखो गेट में कैसा आएगा, गौरव बार मर रहा है. ये मुस्किंगम कैसा पूछ के चलेगा गेट में? गौरव जी देखो बार पूछ लिया, मुस्किंगम आ गया. मुस्किंगम मॉडल ऑफ रूटिंग ए फ्लड थ्रू ए स्ट्रीम व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज अ formula. They have given the formula K0 K1 K2 instead of C0 C1 C2. They have given K0 K1 K2. Routing coefficient for the concerned reach I1 I2 inflows, O1 O2 outflows, sum of K0 K1 K2 for the model. बाबू अंकेश समझ आ गया? Why we have taken previously?
हाँ सी का जगह पे के ले लो, के कुछ भी होता है ना, सी का जगह पे के ले लो बस। कहां चले गए बाबा अंकेश? चलो, floodway with known inflow hydrograph is routed to a large reservoir. Floodway with known inflow hydrograph is routed to a large reservoir. Outflow hydrograph will have obviously attenuated peak with increased time base, ना। So ये डायग्राम से इतना क्वेश्चन आ रहा है, देखो yesterday हम डायग्राम ड्रा किया ना, कल वाला डायग्राम से how many questions we are getting? Attenuated peak with increased time base. Yes, correct. अच्छा करो, correct. Hydrologic flood routing, hydraulic flood routing, continuity equation, momentum equation, energy equation. Hydrologic flood routing, only continuity, 1. Hydraulic flood routing, 1 and 2. Momentum क्या होता है? Momentum, a Saint-Venance equation is called momentum. We'll study in open channel flow. Hydraulic jump में बात किया ना, momentum equation. Bellinger momentum equation open channel flow खत्म कर लिया, ये बच्चे लोग को पता होता है। Bellinger momentum equation because Saint-Venance is unsteady varied flow. Unsteady varied flow can cause hydraulic jump. That hydraulic jump is controlled by momentum equation. So we can take now unsteady varied flow hydraulic jump. It will control momentum equation. Saint-Venance is a momentum equation. बस Muskingum method is used in. बोलो गौरव बेटा। Hydrologic channel routing. The routing of a flood in a given channel using Muskingum method, two of the routing coefficients C1, C0 given, value of C2. C2 is equal to 1 minus C0 plus C1. 1 minus 0.25 plus 0.55. 0.7 आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? Okay, this one minus 0.25. Minus 0.25. So 0.7, then 0.7. चलो, 1 मार्क में इतना आसान होगा, हम ये मिस करेगा तो पूरा मिस हो जाएगा। तो फिर आसान क्वेश्चन आ गया, जल में चलेगा फटाफट करने का टाइम पे। ये तो माइनस दिया है, नहीं देखा तो पूरा गलत हो जाएगा। An inflow hydrograph is routed to a reservoir to produce an outflow hydrograph. Peak of inflow P1, time of occurrence Ti, peak of outflow P0 and time of occurrence T0. Which of the following will be correct? अरे देखो हमारा ये ग्राफ है ना, इनफ्लो आउटफ्लो ग्राफ डाल दिया, एटेन्यूएशन लैग टाइम बोल दिया। ये ग्राफ से इतना सारा क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द ग्राफ। हर एक क्वेश्चन ग्राफ से आ रहा है, देखो। सो फ्रॉम द ग्राफ वी नो ना, आउटफ्लो पीक इज ग्रेटर देन इनफ्लो पीक। मधु गारू, बोथ सेम नॉट पॉसिबल। मधु मैडम, बोथ सेम नॉट पॉसिबल। आउटफ्लो पीक लेस देन इनफ्लो पीक, लेस देन इनफ्लो पीक। आउटफ्लो पीक लेस देन इनफ्लो पीक means inflow peak greater than outflow peak. Inflow peak greater than outflow peak. Time for outflow will be greater than time for inflow. Time for outflow will be greater than time for inflow. So Ti less than T0. You only told na same, both same. Are you only told na? So this is 5 mark wala, jal mein mat chalo, already we solved. For some value difference, no issues. You have solved same, I hope so. 100, 18 hour, waiting factor 0.3 वाला same. छोड़ दो. Muskingum method of flood routing is Siona. What happened? It is saying hydraulic. Siona, it is not hydrologic. They are saying hydraulic. Hydrological channel routing method, Muskingum method. In routing flood hydrograph through reservoir, peak of outflow hydrograph will be smaller than the inflow hydrograph, and it occurs after the peak of inflow. In linear reservoir routing, storage is a function of both outflow and inflow discharges. Reason के बारे में बोलो फटाफट everyone. Reason के बारे में बोलो फटाफट everyone. Linear. अरे ये तो देखो, linear reservoir routing में क्या होता है? linear reservoir routing में storage is a function of outflow only. अरे क्या हो गया गौरव भैया, अभिषेक, नवनीत, फिल गारू, रितुल, सबीर,
ज्ञानेंद्र, सुधांकुल, लीनियर रिजर्वायर लास्ट में लिख दिया, कल सेशन का लास्ट 5-10 मिनट्स में लिख दिया लीनियर रिजर्वायर को. सो दिस इज अ फॉल्स. आंसर इज सी. समझ आ रहा है? फंक्शन ऑफ आउटफ्लो ओनली, नॉट इनफ्लो. फंक्शन ऑफ आउटफ्लो ओनली, नॉट इनफ्लो. The fundamental storage equation through a river reach considers that inflow is balanced by outflow plus change in storage in the river reach over the routing period has been considered. Obviously ना, ये तो obviously करेक्ट ना. fundamental storage equation through a river reach considered total inflow balanced by total outflow plus change in storage in the river reach. So हम ऐसा लिख सकता है basic fundamental equation. Fundamental equation, what is fundamental equation? I1 plus I2 by 2 minus Q1 plus Q2 by 2 is equal to change in storage by change in time. They ask total inflow. What should be total inflow? Total inflow is a sum of total outflow plus change in storage. होता है या नहीं? What is total inflow now? Total inflow is equal to total outflow plus change in storage. So that is what they are saying. Total inflow is balanced by total outflow plus change in storage in the reach over routing period, because they mentioned time also, na? Not just change in storage. Change in storage with respect to time, that is during routing period, has been considered. True. To be adaptable for actual computation, the storage equation is recast in the form of, आप कैसा भी recast कर सकता है ना. So knowns and unknowns एक साथ में ले लिया. हम क्या ले लिया? Knowns and unknowns ले लिया एक साथ में. True only. ऑप्शन ये. समझ आ रहा है? All known values on one side, all unknown values on one side. स्टेटमेंट 2 1 का एक्सप्लेनेशन कैसा होता है? इफ नोन्स इक्वल टू अननोन्स नहीं होगा तो ये बैलेंस कैसा हो जाएगा? इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो प्लस स्टोरेज. ये तो होना चाहिए ना बाबू निपुण जी. नोन वैल्यूज इज इक्वल टू अननोन वैल्यूज नहीं होगा तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा. ये बैलेंस तो इक्वल नहीं हो पाएगा. दैट इज व्हाट मस्किंगम मेथड ऑफ रूटिंग ए फ्लड थ्रू रिवर रीच इज नॉट अ सिंपल रिकास्ट ऑफ स्टोरेज इक्वेशन. नॉट ए सिंपल रिकास्ट ऑफ स्टोरेज इक्वेशन. ऑब्वियसली मस्किंगम में सेपरेट हम कोएफिशिएंट्स लेके आ गया ना. C0, C1, C2, K and X सेपरेट कोएफिशिएंट्स लेके आ गया ना. Not is correct. Obviously, Muskingum is not a simple recast. Modified pulse method, Goodrich equation, those are simple recast. समझ आ रहा है? Modified pulse method, Goodrich equation become a simple recast. But Muskingum तो simple recast नहीं होता है. Yes. The Muskingum method first develops trial storage loops, contribution from both inflow and outflow, and also algebraic difference between them. So ये पूरा होता है ना Muskingum equation में. both consider inflow outflow consider C0, C1, C2, they can say algebraic difference. That is why it is not a simple recast of storage equation. इनका वजह से मस्किंगम इज नॉट ए सिंपल रिकास्ट ऑफ स्टोरेज इक्वेशन. ट्रायल स्टोरेज लूप्स नथिंग बट हमको पहले फर्स्ट वैल्यू ऑफ इनफ्लो पता नहीं ना, आउटफ्लो पता नहीं है ना. एज इट इज वी आर कॉपिंग आउट. हम एज इट इज कॉपी करेंगे. इनफ्लो फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू आउटफ्लो फर्स्ट वैल्यू. ये तो ट्रायल होता है ना. एज्यूम होता है ना बेटा. ये तो डिराइव्ड नहीं, एज्यूम हो जाएगा. बोलो लीनियर रिजर्वायर में क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन गलत हो गया, अभी सही हो जाएगा. पहले पुराना क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन गलत हो गया ना, इनका वजह से अभी ये क्वेश्चन अच्छा होता है. At a time, third hour and fourth hour of the inflow values are T3 and T4, 18, 42. C0, C1 in the Muskingum equation given. Outflow at a third hour is 15. So if they want to give you one question related to it, Gaurav, how get 2 marks for Muskingum? If they want to give you one question, they can give this model. C0, C1 given C2, 1 minus 0.042, 0.538. Time third hour, fourth hour. Inflow values are 18 and 42. Outflow value for third hour is 15. What is outflow value for fourth hour? This is the question. So outflow for fourth hour, Q4. C0 क्या होता है? C0 0.042. Present inflow 42. Plus C1 0.538. Previous inflow 18. Plus 0.42. Previous outflow 15. $17.748. 17.75. समझ आ गया बाबू कैसा करना? अंडरस्टैंड? नवनीत कंप्लीटेड राइटिंग? किसी को डाउट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए?
वेज स्टोरेज इन रिवर रीच ड्यूरिंग द पासेज ऑफ फ्लड वेव्स। फ्लड वेव पास होने के टाइम पे वेज स्टोरेज क्या होता है? अरे राइजिंग फेज में नेगेटिव कैसा होता है बाबू संयम? फॉलिंग फेज में नेगेटिव होता है, राइजिंग फेज में पॉजिटिव होता है ना। पॉजिटिव ड्यूरिंग राइजिंग फेज, नेगेटिव ड्यूरिंग फॉलिंग फेज, पॉजिटिव ड्यूरिंग राइजिंग फेज, नेगेटिव ड्यूरिंग फॉलिंग फेज। ये तो डायग्राम है, छोड़ो, हो गया। अरे 1 minute, I will bring another PDF for you. This one you need, Sudha garu. निपुण ऑलवेज थिंक अबाउट आसान मॉडल्स के लिए, सिंपल मीन जैसा आसान करने के लिए सोचेगा। ऐसा हर एक जगह में मत सोच लो ना बेटा। हो गया सुधा? So at a time, fourth hour and fifth hour inflow value is given 24 and 60. C naught C1 given. Fourth hour value is 15. What is fifth hour value? सॉल्व करेंगे? हाँ, वैल्यूज तो डिफरेंट है ना, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मॉडल तो सेम है, वैल्यूज डिफरेंट। सॉल्व करो प्लीज। वाह, इतना जल्दी? ओके ओके मुक्का गारू, टेक केयर। C2 क्या है? C2 so now Q5 is equal to C naught 0.032 into 60 present value plus C1 0.516 into 24 previous value 0.452 into 15 आ गया एवरीवन? भैया यू कहीं आंसर आने के बाद क्यों रोएगा बाबा? हाँ, आंसर नहीं आ गया तो ठीक है, आंसर आने के बाद क्या है? Calculate peak of the outflow hydrograph in a river reach using Muskingum method. Given C0 C1, starting value of outflow hydrograph as 15 meter cube per second. Starting value of outflow hydrograph as 15 meter cube per second. What should be peak value? सॉल्व करेंगे? पीक तो निकलना पड़ेगा गिवन डेटा से। C2 तो मिलेगा पहले, ये तो आसान है। So finding out the Q values is important. The starting Q value is given here 15. Starting Q value is given here 15. बाद में कंटिन्यू करो, आप करो। So पहले Q1 क्या होता है बोलो बेटा? 12.855. ओके गुड। Q2 17.22. Q3 29.48.
44.51, 46.9, 43.04. Clear? Yes. 46.9 is Q peak. Everyone got it? किसी को नहीं आ रहा है? सेम टाइम पर नहीं आएगा ना रे बाबा, ये इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं? बाद में आएगा, बाद में इमीडिएटली कैसा मिलेगा आपको? इमीडिएटली तो नहीं मिलेगा ना. सो एवरीवन गॉट द आंसर्स? बोलो एक बार, अरे एक बार बोलो ना, एवरीवन गेटिंग आंसर्स आर नॉट? और किसी को डाउट है इनके बारे में? चलो भाई, दिस वी हैव एंडेड फ्लड रूटिंग, वी हैव एंडेड फ्लड रूटिंग. कल तो शुरू करेंगे वेल हाइड्रोलिक्स. विल स्टार्ट वेल हाइड्रोलिक्स टुमारो. वेल हाइड्रोलिक्स टुमारो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो. टुमारो पता है ना, टुमारो क्या है? 8 बजे हाइड्रोग्राफ का, 8 बजे हाइड्रोग्राफ का टेस्ट है टुमारो. ओके, 8 PM टुमारो. आपको कुछ डाउट होगा तो भी सॉल्व करेंगे. अरे 8 PM बोलने के बाद सुबह पूछ रहे, PM सुबह आता है आपको? हाइड्रोग्राफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोग्राफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ना क्या है? ओनली हाइड्रोग्राफ टेस्ट इज देयर. ओके वेल, हाँ वो क्वेश्चन है गौरव, एज पर गेट सिलेबस वेल हाइड्रोलिक्स इज इन हाइड्रोलॉजी ओनली. कुछ टीचर जियोटेक्निकल में पढ़ेगा, कुछ टीचर एनवायरमेंटल में दिएगा, बट एक्चुअली एज पर गेट सिलेबस इट इज इन हाइड्रोलॉजी. Yes, poll we can give Divyanshu. Test will be like a poll. I give question, give time 3 minutes या 4 minutes. Poll दिएगा, poll में आप आंसर करना पड़ेगा. Then after that I will solve the question. Stream gauging well hydraulics के बाद में करेंगे. Well hydraulics के बाद में stream gauging करेंगे. हम नहीं चलेगा बाहर. निपुण जी, हम इधर भी रहेगा, हम बाहर नहीं निकल गया. टेंशन में मत चलो. पूरा हाइड्रोलॉजी सिलेबस खत्म करने के बाद भी हो जाएगा. क्या? I will check you. I will check and tell you. Okay, units of f of t. You are only asking units of f of t. आशीष गारू. चलो, लिस्ट में उसका नाम पहले था. ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. वेल हाइड्रोलिक्स पहले करेंगे, बाद में करेंगे. बाय बाय. बाय बाय, मिलेंगे कल. चलो, अरे इवनिंग 5:30 क्लास इज दे. 5:30 एयर पोल्यूशन में मिलेंगे उपाध्याय. स्किप मत करो, मिलेगा तब पर आपको. हाँ, जियोटेक नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सर्विंग नहीं है ना. नो जियो, नो ट्रांसपोर्टेशन, नो सर्वे, नो स्ट्रक्चर.